You are welcome in our YouTube channel. Now we will study today biological classification, which is chapter 2 or second chapter of the 11th standard NCERT. Its first part is important terms. Before we read this, before we will study this five type. There are 5 kingdom classification, under which first is Monera, second is Protista, third is fungi, and Plantae and Animalia. 5 type classification. There are 5 kingdom. So before we study that, some certain terms are important to know the meaning and explanation of the certain terms. Number 1 is Plasmodium. These terms, all terms will come when we will study that 5 kingdom. So first is Plasmodium, second is Plankton, third is types and tools of reproduction, and fourth topic is phylogenetic relationship. Next is Mycelium, next bacteria, fungi and cyanobacteria. So number 1, Plasmodium. What is Plasmodium? Plasmodium, a vegetative feeding a non-cellular mobile mass of naked protoplasm. Non-cellular, this word is here, non-cellular or naked protoplasm, containing many nuclei. Non-cellular mobile mass of naked protoplasm containing many nuclei. It means there is no cell wall or cytoplasm, cell wall or cell membrane. Only cytoplasmic mass is there, in which a number of nuclei are present. So this type of thing, this type of thing is called Plasmodium. So it is a stage in the life cycle of Protista. Protista के life cycle में ये चीज मिलेगी, Plasmodium term. Second is Plankton. What is Plankton? Plankton is aquatic organism which move with the flow of water. Aquatic organism is flowing with the movement of water, with the flow of water. It means there is no locomotive organ. That organism which do not possess any locomotive organ, जो aquatic organism हैं और जिनके कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है मूवमेंट का, और वो वाटर के फ्लो के साथ चलता जाता है, उसको प्लैंकटन बोलते हैं. इसका भी 2 पार्ट हो गया, फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन. फाइटोप्लैंकटन रिलेटेड विथ प्लांट and zooplankton related with animals. So under phytoplankton, that aquatic organism, example is diatoms. It is part of Protista. When we will study that Protista, second kingdom, so this term will come, phytoplankton and zooplankton. Zooplankton is small protozoa and small crustaceans. Protozoa and small crustaceans. Protozoa is part of that Protista, and small crustaceans. Arthropoda family, phylum is Arthropoda, crabs, small crabs. Protozoa and that small crabs, they also move with the flow of water. So that type of organism which move with flow of water, that is called zooplankton, and first one was phytoplankton. Collectively we will say plankton. So plankton. So third is types of tools and tools of reproduction. Types of reproduction and tools of reproduction. Types of reproduction we have already studied in many chapters: vegetative, asexual and sexual. 3 types of reproduction. So vegetative, under vegetative there is fragmentation, fission and by budding. Now second one is asexual. Asexual and sexual, both type of reproduction, the tools of reproduction is known as spores. But
name of spores are different. In asexual, name of the spore is Conidia, a planospore, zoospore, and sporangiospore. So 4 names. These all are tools of asexual reproduction. Conidia, a planospores, zoospores, sporangiospore. So 4 types of spores which are tools of asexual. Difference between aplanospore and zoospore. Aplanospore is non-motile and zoospore is motile. Zoospore can move. Movement के लिए flagella और cilia होंगे. So all spores are produced in sporangium. ये स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं जिस चीज़ में उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं. ये स्पोर का प्रोडक्शन एसेक्सुअल में इधर आया और इधर सेक्सुअल जो है इसमें भी है. इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड oospore. एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड oospore, दीज आर टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको शॉर्ट में ABOS याद कर सकते हैं. एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, oospore, S for sexual reproduction, ABOS. So now the sexual cycle or part of sexual reproduction, there are 3 step. Is first step is plasmogamy, second in karyogamy, and third is meiosis. These 3 steps constitute that sexual cycle or sexual reproduction. So first plasmogamy. Under plasmogamy, protoplasm of 2 gametes will fuse. Plasmogamy, only protoplasm will fuse. Under karyogamy, nuclei of both gametes will fuse. And under meiosis, there is division of zygote in 4 haploid individual. So these 3 terms constitute sexual cycle. So now we will deal that phylogenetic relationship. So what is phylogenetic relationship? Phylogenetic, this term will come under this classification. Phylum, you must be knowing phylum and genetic, genus. Phylum, phylogenetic, the relation of phylum and genus. You must be knowing that kingdom, that main division is kingdom. Kingdom is divided into phylum, phylum into subphylum, and then further class, genus, species. So phylum and genus relationship, it is called evolutionary relationship. We can understand this term. Phylogenetic relationship is evolutionary relationship between 2 organisms. Next is mycelium. What is mycelium? Fungi are filamentous. फिलामेंट होते हैं उसमें, एंड फिलामेंट जो है फिलामेंट्स ऑफ फंजाई इज कॉल्ड हाइफी. जो फंजाई का फिलामेंट है उसको हाइफी कहते हैं. और हाइफी का नेटवर्क, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम. सो हाइफी एंड माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम. सो it is related with fungi. Under this classification, we will this term will come. Next one is bacteria. Here very comprehensive definition of bacteria is here. Bacteria are single celled prokaryotes, most having a rigid cell wall, universal in distribution, and play many important role as agents of decay and mineralization and in recycling of elements. Some are pathogenic. तो बिल्कुल शॉर्ट में डिफिनीशन दिया हुआ है बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड, एक सेल का होगा, प्रोकैरियोटिक है,
प्रोकैरियोटिक में माने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, उसका कोई चीज़ मिसिंग होगा, इसलिए उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। उसके बाद मोस्ट हैविंग अ रिजिड सेल वॉल, इसमें रिजिड सेल वॉल होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। एंड इट इज़ यूनिवर्सल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया इज यूनिवर्सल, हर जगह पाया जाएगा ये। एंड प्ले मेनी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है एजेंट ऑफ डीके, डीके में डिकेइंग एजेंट है, मिनरलाइजेशन में काम आता है, एंड रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स है, एंड सम आर पैथोजेनिक, कुछ बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक भी हैं। नेक्स्ट इज फंजाई, फंजाई आर यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक था और ये यूकैरियोटिक आ गया। यूकैरियोटिक मतलब एकदम जो प्रिमिटिव वाला स्टेज जो होता है, जिसमें समथिंग मिसिंग, कुछ कुछ स्ट्रक्चर मिसिंग होते हैं, उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जो कंप्लीट रहता है सारा चीज़, जैसे इसमें प्रोकैरियोट में सेल वॉल वगैरह में अंतर, वो कल नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये यूकैरियोट्स है, ये कंप्लीट है स्ट्रक्चर जो है। इट इज फंजाई आर यूकैरियोटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म which obtain nutrient by the absorption of organic compounds from their surroundings. So it is clear, but fungi are eukaryotic, non photosynthetic है, इसलिए क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसका जो है अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, वो जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उससे वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो इसलिए फंजाई जो है ये हो गया, इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है। फंजाई आर यूकैरियोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम by the absorption of organic compounds from their surrounding. Fungi generally lack hard part, इसमें हार्ड पार्ट नहीं होता है फंजाई में। हार्ड पार्ट जो सेल वॉल वगैरह सब जो होना था नहीं होता है, इसलिए इसका फॉसिल नहीं मिलता है, बहुत रेयर फॉसिल्स हैं इसके। फंजाई जनरली लैक हार्ड पार्ट। सो लास्ट टॉपिक अंडर दिस important terms we will discuss cyanobacteria. Old name was blue green algae. Old name previously it was put under that classification. Now it is put, its new name is cyanobacteria. It is not algae, it is a type of bacteria and it is placed in first kingdom Monera. मोरेरा में इसको रखा गया है, इसमें बैक्टीरिया है, इसमें रखा गया है उसको। दे कंटेन क्लोरोफिल ए, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ऑन थाइलेक्वाइड ये होता है, क्लोरोफिल ए जो है थाइलेक्वाइड होता है। इट हैज़ नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए इसको जो है एल्गी ग्रुप से निकाल दिया गया। एल्गी जो है प्लांटी ग्रुप है। एल्गी इसमें हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ये प्लांटी का फर्स्ट फाइलम इज एल्गी। तो एल्गी से इसलिए इसको हटा करके यहाँ पर लाया गया, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ओनली थाइलेक्वाइड होते हैं। थाइलेक्वाइड दैट कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर होता था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सो सिर्फ वही होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल तो ओनली थाइलेक्वाइड जो स्कैटर्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए इसको वहाँ से इस ग्रुप से हटा दिया गया, क्योंकि ये जो है कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है। सो दे कंटेन क्लोरोफिल ए ऑन थाइलेक्वाइड। इट हैज़ नो क्लोरोप्लास्ट। दे आर बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन एटमॉस्फेयर। जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में अभी ऑक्सीजन है, ये विश्वास किया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि सबसे पहले यही ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया था, और आज उसके द्वारा जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन हम लोग के अर्थ पर जमा हुआ और हम लोग उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। सो दिस साइनोबैक्टीरिया, सो दे कंटेन क्लोरोफिल ए ऑन थाइलेक्वाइड। इट हैज़ नो क्लोरोप्लास्ट।
They are believed to have been the first oxygen producing organism in the atmosphere. Okay, next day we will discuss in detail all those 5 classification. Okay, thank you.